Let's proceed our class. As we are discussing about the approaches of psychology, so last three approach has left, so that we complete today, right? Even so, after the completing of this approach, we will do new topics, that is psychology is a science, but I hope it is not possible in this class. Only three topics will be completed. Just wait. So what we will do today, that is mainly biological approach, because in the last class we have completed about cognitive approach, right? So cognitive approach, if you want to, इन सबको जैसे जो क्लासेस मिस हो जाए संडे में बैठ करके अलग से समझना है, बिकॉज एक बार फ्लो बिगड़ेगा तो नुकसान आपका होगा। सो संडे में बैठ जाना है, और बच्चे जैसे एक एक बच्चे को हम बैकअप देते हैं, सो आप भी ले लेना है। बट अगर आर्टिफिशियल रीजन से आप नहीं आते तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। एक जेन्युइन रीजन से अगर आप नहीं आते तो फिर कोई नहीं, फिर उसका सॉल्यूशंस होता है, उसमें हेल्प कर सकते हैं। लेट्स प्रोसीड। See biological approach. Biological approach. Uh, Basically, it is also an evolutionary approach. Evolutionary approach, that is, it is also called evolutionary approach. So this approach mainly believe that the causes of human behavior, means the reason of causes of human behavior is mainly that biological processes, means biological processes are the major causes of human behavior, and at the certain extent it is completely true. Means the biological processes, or you can say also phenomena, right? Phenomena means biological process or biological phenomena are the major causes of the human behavior. So what are that biological phenomena or the process that is the major causes of behavior? Number one, that the first basic causes of biological behavior is genes. It means genes influence human behavior and mental process. Means genes set human behavior and mental process. This was the basic belief of the biological psychologists. Second is hormones. Hormones, human have some biochemicals. So that biochemicals basically decide human behavior. Biochemicals decide human behavior. Like that is hormone. Means hormone influence in the formation of mental process and behavior, especially in the developmental psychology. Means psychology says that we have some hormones, that hormones affect the human behavior, especially in teenage.
In the teenage, certain hormone releasing is very fast and very high in amount that affect the human behavior. Similarly, there is other things that is neurotransmitters. Neurotransmitters also influence the human behavior. It means again in our neurons there are some chemicals. It is again biochemical. It is also biochemical. That biochemicals are present in our neuron that influence our behavior. Another phenomena that is brain. Brain means because then basically nervous system etc etc. So that again influence our behavior means इसका भी असर हमारे behavior and mental process पर पड़ता है ऐसे psychologists मानते हैं. Means most of behavior and mental process are set by the biological rules, and biological rules are almost gradual. So this is a gradual process. And biological process are basically into developmental in nature, right? So, developmental in nature, it means it is in sequence. Its influence, its impact in sequential manner. It is not just very fast or very slow in speed. Okay? So that we can say these biological mechanisms influence our behavior. Write down right now in your copy. Note down that biological approach is also called evolutionary approach. This approach believes that biological processes are the major causes of human behavior. Biological processes are the major causes of human behavior. Example: hunger, motivation is a source of behavior. Studied by Paula Skinner, and Maslow. Right? Sleep, sleep, sleep behavior, sleep behavior influence the human action and mental processes. Studied by Lindsley, 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 studied by Lindsley. Freud, actually Lindsley has given a brain activation model, right? So that, so many examples you can take, means where biological processes are directly influencing the human psychology. Even this approach believe कि biological process से ही human की psychology produce होती है, ये इनका belief है, right? So biological processes start to study from 1950s.
या 1960s. बेसिकली 1960s 65 में बायोलॉजिकल प्रोसेस को पहली बार पढ़ना शुरू हुआ. Even though in ancient India, in ancient world, the Hippocrates, Plato's, many more have studied the biological process. So right, इसमें एक point लिख सकते हैं. Biological process and its connectivity with psychology, yeah, its impact on psychology, start to study at the time of Hippocrates. Boxing, that is Hammer theory. Basically what? Hammer theory. Hammer theory given by Hippocrates. Hippocrates basically says that we have some chemical. That chemical are like blood. Means if human have more blood, have more cheerful, and there is some bile. Human have some bile, means that is a type of a juice which is mainly used for the digestion of food. So Hippocrates says we have two biles, yellow biles and black biles. Black bile. So both biles influence human behavior. Then next is Fulcrum. Fulcrums also influence human behavior. Got it? Means we have a lot of biochemicals. That biochemicals influence the human behaviors according to Hippocrates. Right. Next, it was Hippocrates, Plato. Plato has given the concept of dualism. Dualism is body and mind both are separate entity. Body functioning is different from mind functioning. Earlier, humans do not have any idea about that biological functioning and human functioning are separate. So that was first mentioned by Plato. तो प्लेटो ने बोला. देन उसके बाद ऐसे और भी बायोसाइकोलॉजिस्ट हैं, those who are basically experts of physics, they have studied there. So बायोसाइकोलॉजी की जो एक्चुअल में साइकोलॉजी की शुरुआत होती है जीन्स से हम लोग जो बोलते हैं, that was ग्रेगर जॉन मेंडल. राइट. सो एक पॉइंट ये भी लिख देना. इन biological processes mainly we studies in a biological process mainly we study in a modern time. You write, not in a modern time, you can write in a modern time mainly we biological process we study. Number one, that is genes, hormone, brain, neurotransmitters, genes, brain, hormone, neurotransmitter, etc. You can write etc. और भी चीजों को स्टडी कर सकते हैं. So first, so there are the many psychologists who studied the biological approach. Example, Broca. There are the many psychologists, those who study biological processes. Number one is Broca. Broca has identified Broca region. Broca's area बोला जाता है. Broca's area is a basically speech production area.
Means Broca was one of the popular psychologists, popular biologists who had studied mainly identified the brain areas. Other is Galton. Galton has studied the genes or genetic connectivity, genetic connectivity with human behavior. Broca has studies language production area, yeah, speech production area. Means speech produces mainly into Broca region of our brain. And Galton, Galton was a great psychologist, TON. Galton was great psychologist who has studied mainly genetic connectivity with psychological process, even intelligence mainly. गाल्टन कहता है कि जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस उसकी बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिसाइड होता है, उसके जीन से डिसाइड होता है. मींस उसने कॉन्सेप्ट दिया यूजेनिक्स. यूजेनिक्स मींस गुड जीन्स, and the good genes, if they will marry together, definitely they will produce good childs and their childs will have good intelligence. So this was the Galton's principle. Galton कहता है कि इस तरह की चीजें ह्यूमन की लाइफ में होती हैं. And then after understanding of Galton, there is many more psychologists like Aldous. That is Aldous. Olds के नाम से जाने जाते हैं. Olds. Olds has basically studied the brain dissections. He has done brain dissections, work mainly on Alzheimer. Alzheimer is a memory loss disease, so mainly works on Alzheimer. Right? Mainly works on Alzheimer. So other psychologists you can contribute, that is Darwin also. We can evolutionary. Darwin also works in these concepts. Even they were also biologists, and then Mendel also. Mendel was even biologist, but their contributions always be remembered into the biopsychology. Another is Wernicke is also. Wernicke is there. Wernicke areas he has identified. Wernicke he has identified Wernicke areas. Wernicke area. Wernicke area is a mainly speech product perception area. Right? Mainly it is a speech perception area. So these are the major psychologists who had a work, even many more. Like one of them is Edison, not different Edison. This was Edison. Edison was suffering. Edison was patient who was suffering from neurological disorders. So he has identified some syndromes. Edison syndrome. Right? So these are the major psychologists. And right now we need to connect biopsychology. एक एक करके हम कनेक्ट करते चलते हैं. इसको इरेज कर दो. चलिए प्रोसीज फर्स्ट करके biopsychology के concepts and if you want to understand biopsychology, so first of all, in a biopsychology, you must understand about cell, and you must understand about cell because the basic understanding of cell will help you to understand developmental psychology. So, in a cell, if you have studied, this is a what? क्या बोलते थे इसको?
cell membrane, and this is what? Cytoplasm, and this is what? Nucleus. So psychologists do not have interest in cell membrane, cytoplasm. They have interest only to understand nucleus. Because in a nucleus there is a different types of threads are there. You can say like thread. Thread is just I will draw in different colors. Means they says that it is a thread like structure. इसमें धागे जैसा कुछ दिखाई पड़ता है. उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? Chromosomes. And chromosomes are like thread structure. And when these chromosomes have in a particular structure, we call them genes. Right? So that chromosomes से ही genes बनेगा, structure बनेगा. तो पढ़िए होगा आप basically. So human have how many chromosomes? 46. Again, if they are into pairs, so that is called 23 pairs of genes are there. And in this 23 pairs, because we mentioned this is in structure. So these structures होते हैं like this. Even it is mentioned in many books like Robert Bennett and many more which we will study. Like chromosome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As the number of chromosome will increase, the size of chromosome will decrease. So the chromosomes last में कौन सा आता है? Last one is basically sex chromosome. So we can say कि 22 pairs of chromosomes X होंगे और 22 pairs इधर XY होंगे. So 22 pairs जो इधर हैं उन्हीं को हम लोग बोलेंगे ऑटोसोम. They were considered as autosome. और जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम. Sex chromosome. So we have autosomes and sex chromosome. Sex chromosome because psychology में sex का मतलब gender होता है, right? So last pair of chromosome is sex chromosomes. So this is basically I hope well you understand about it. X मिलेंगे तो क्या बनेगा? X and this will be combined that will create XY. And this basic principle are given by याद हो किसने दिया था? जॉन मेंडल. जॉन मेंडल इसमें दो तीन बड़े कीवर्ड्स हैं जिसको कभी किसी आंसर इवन बायोलॉजिकल अप्रोच अभी तक यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा अप्रोचेस के अंदर, बट इसकी समझ का इस्तेमाल करके पेपर 2 में और डेली करंट अफेयर्स आता है. कोई सिंड्रोम एक दो बार पूछा हुआ सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम वंस दे हैव आस्क्ड. तो सिंड्रोम्स पूछ लेते हैं इसलिए इसकी बेसिक समझ होनी चाहिए, राइट? तो इफ यू क्रोमोसोम कम होता है डाउन सिंड्रोम. हां गुड मॉर्निंग बेटे. डाउन सिंड्रोम वालों में एक क्रोमोसोम कम होता है. हां डाउन से वो तो बताएगा सारे सिंड्रोम्स वाले लिखा भी हुआ शायद नोट्स में. हर एक सिंड्रोम्स और उसमें क्या क्या होता है वो भी मेंशन कर दिया हुआ, राइट? So here is basically जो ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स है, सेक्स क्रोमोसोम्स में ही एक कॉन्सेप्ट बताया उन्होंने, दैट इज इसको पहली बार जब पेयर में पाया, इट इज ऑलवेज इज इन पेयर एंड दिस पेयर को एलील्स कहा जाता है. दैट इज कॉल्ड एलील्स. आपने पढ़ा होगा एलील्स. एंड दिस क्रोमोसोम्स में अगर सेम क्रोमोसोम्स हैं तो उसी को कहा जाता है क्या बोलते हैं? होमो ऑटोसोम और एक होता है हेटेरोसोम. तो यहां पर अगर दोनों सेम हो जाएंगे सो दैट इज कॉल्ड ऑटोसोम्स. एंड देयर इज अ हेटेरोसोम्स whenever there is a separate pairs of chromosomes like X and Y is there, that is hetero. So autosomes and heterosomes, these two are there. So इसमें भी एक जाइगोटस होता है.
जब आप देखेंगे तो इसका बेसिक प्रोसेस डेवलपमेंट साइंस में आता है। जैसे एक्स एक्स या एक्स वाई, एक्स एक्स मीन्स व्हाट, एग, और यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म, एंड इफ दे कंबाइन टुगेदर, अगर बाय द वे दोनों मिल जाते हैं, इफ अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर क्या क्रिएट होगा, दैट इज जाइगोट, जाइगोट, एंड वही जाइगोट आगे चलिए क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और वही एम्ब्रियो आगे बन जाएगा फिटस, दैट एम्ब्रियो विल कन्वर्ट लेटर फिटस, एंड फिटस वो बॉडी से बाहर आ गया तो उसी को इन्फेंट्स बोलते हैं। सिंपल प्रोसेस, डेवलपमेंट साइंस एक है, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। बट इन केस ऑफ अगर किसी में क्रोमोसोम्स के इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, so that will create basically syndrome, right? So in case of any types of mutations, this word mutations given by Charles Darwin. So in case of mutations, अगर कुछ भी mutations होते हैं तो उसी conditions में हमारे अंदर syndromes create हो जाते हैं। And right now syndromes are so much in the news also, and syndromes are very much popular. The reason being because syndromes are continuously increasing, right? तो ऐसे mention कर देना, genes have some basic biological processes, yeah, genetics have some basic biological genetics have some basic processes, like you can mention, right, some basic processes. But in case of any mutation, but in case of any mutations, in case of any mutations, it will create syndrome. Syndrome is a psychophysical character, psychophysical character, a psychosomatic character, psychosomatic characters of an individual, but it is not a disease. मतलब सिंड्रोम्स एक साइकोसोमैटिक कैरेक्टर है, ये कोई बीमारी नहीं होती, राइट? जो बीमारी होगी वो डेफिशिएंसी की वजह से होगा या फिर उसमें कुछ, बट दिस इज अ जेनेटिक म्यूटेशंस, and due to genetic mutations many syndromes created in them. तो वो सिंड्रोम्स एक एक करके हम नाम कुछ पॉपुलर सिंड्रोम्स हैं और उनसे साइकोलॉजिकल प्रोसेस कैसे इन्फ्लुएंस होता है वो देख सकते हैं, राइट? लाइक नंबर वन, दैट इज x, there is a very simple concept, 44 plus xxy. अब होना क्या चाहिए था यहाँ पर, या 44 प्लस एक्स होना चाहिए था या एक्स वाई होना चाहिए था, बट इसके साथ गड़बड़ होगी। यहाँ 44 एक्स भी है तो मींस कुछ ना कुछ फीमेल के कैरेक्टर्स भी होंगे, एंड एक्स वाई है तो there will be some male characters. So this syndrome is called basically Klinefelter syndrome, right? Klinefelter syndrome. Klinefelter syndromes. Klinefelter syndrome means when individuals have both characters, means at a certain extent it looks like a male but they have a female characters. So इसको हम कहाँ पर पढ़ते हैं, LGBT कैटेगरी का। While we will study LGBTQ, तो उसके अंदर हम लोग इसको पढ़ेंगे। Q means square, LGBT and LGBTQ
So in that we will study about Klinefelter syndrome. इनको ही थर्ड जेंडर की कैटेगरी में रखा है. Like they are not completely male and they are not completely females. अब इनकी जो खास बात है, ये पहली चीज तो जेंडर कंफ्यूजन है. सेकेंड प्रॉब्लम इज देयर, दे आर मेंटली रिटार्डेड. दिस इज वेरी कॉमन. क्लिनिक फिल्टर वाला पर्सन आप जो देखते हो सड़क पे तालियां बजा के पैसे मांगते हैं, वो कभी भी कुछ ही केस, एक्सेप्शनल केस में वो जीनियस हुए. Maybe some of them are good musicians, some of them are very good choreographer in film industry. Otherwise ये सब जो है mentally retarded होते हैं, मंद बुद्धि के. इसके रीजन दो हो सकते हैं. What is genetics, other is environment, because do not permit to them to take education earlier, right? तो इस वजह से भी इनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं आती. Then second is 44 plus XXX. Means इसमें triple X, 4X, 5X, multiple number of X can be there. So this is called super female. This is called, means this female have abnormalities, right? इसको फीमेल होगी, उस फीमेल के अंदर बायोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी में उसके लिप्स का लंबा होना, कुछ ना कुछ एब्नॉर्मल होगा. एंड दिस इज ओनली प्रेजेंट इन फीमेल. जैसे लाइक दिस इज प्रेजेंट इन मेनली मेल. क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के लोग मेनली मेल नेचर के होते हैं. अच्छा, इसका फायदा जीएस में भी आप उठाओ. जिससे बायोसाइकोलॉजी के क्वेश्चंस जीएस में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, हार्मोन के कॉन्सेप्ट, ब्रेन के कॉन्सेप्ट. आप पेपर हर साल का जीएस का उठाइए, इन चार टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आता है, बिकॉज ये जीएस से थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो सुपर फीमेल, these females have basically not a good traits. They are exploiting to the male basically. ये इनके अंदर ओवर सेक्सुअलिटी की बहुत सारी स्टडीज देखी गई. कई होते हैं ना, कई फीमेल जिसमें बहुत जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है. They have a basically polyandry type female. Polyandry means the female who have more than one husband, right? Another is third 44 plus XO, that this is called Turner syndrome. This is called Turner syndrome. Again, this is mainly present in females, not in males. And these syndromes have again abnormalities. इस तरह की फीमेल में जैसे फीमेल के सारे कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे. एग्जाम्पल, फीमेल के दो बेसिक कैरेक्टर्स. नंबर वन, ब्रेस्ट का ब्रॉड होना, हिप का ब्रॉड होना, एज आई मेंशन इन द मिनी क्लास. तो ऐसी फीमेल के अंदर ना तो ब्रेस्ट का ठीक से डेवलपमेंट होगा, न तो हिप का ठीक से डेवलपमेंट. अंडर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन एंड मेंटली रिटार्डेड इज वेरी कॉमन. ये मंद बुद्धि के लोग होते हैं, राइट? तो दीज फीमेल्स आर बेसिकली जो मंद बुद्धि के होते हैं, मींस इनका जेनेटिक्स इंटेलिजेंस बहुत कम है. Other is there, that is a 45 plus XX or maybe XX. This is called basically Down syndrome. In a Down syndrome, if you will see, they are basically called Mongolites. Mongolites means these people are very small in size. We call them to Lilliputian. अब भारत में बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे. इवन एक आईएएस ऑफिसर भी हैं जो डाउन सिंड्रोम से हैं, दैट इज आरती मेहरा, उत्तराखंड कैडर. सो शी इज अ ग्रेट लेडी ऑफिसर एंड वो भी एक इसी कैटेगरी में. और ईदा सिंघल का नाम सुना होगा, उनमें भी कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज. But right now she is IAS officer. She has qualified 4-time IRS, and lastly she has got the first rank into IAS. Right now she is in Delhi cadre. So बहुत अच्छा है. And she has highest, she had scored highest marks into mains till now.
अभी तक के सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो मार्क्स जीएस मेंस में आए हुए हैं दैट इज जिलासन, इतना भयंकर लिखती थी। अब वो तो मुझे ध्यान नहीं है। द ऑल टाइम है अभी तक का कितने ईयर्स जब से मतलब उसके पहले भी था और अभी तक का भी टिल दिस ईयर उनके कुछ ज्यादा परसेंटेज गए, 65 से भी ज्यादा गए, मतलब दैट वाज अ जीनियस गर्ल। और उसकी रैंक और उसकी नीचे वाली रैंक बीच में बहुत गैप था, बहुत ज्यादा ग्रेट ईरा सिंगर। And then there is the next is other syndrome like, अच्छा देखो ये अगर यहाँ से होगा तो ठीक है, लेकिन अगर इन केस ऑफ सिंड्रोम्स 1 2 3 4 किसी में एबनॉर्मलिटी हो जाए, सो वी कॉल देम टू ट्राइसोमी, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी। सो ट्राइसोमी 18 इज देयर, ट्राइसोमी 15, ट्राइसोमी 5 4 कुछ भी हो सकता है। तो in case of abnormality in our autosomes, so that is called trisomy. So many trisomies are there, like trisomy 18. Trisomy 18 are basically related to different syndromes. It is basically called देखो मेंशन होगा ट्राइसोमी 18 के क्या नाम है, मुझे थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। एडवर्ड सिंड्रोम, यस। एडवर्ड सिंड्रोम्स में वो लोग होते हैं जो बहुत उनकी बॉडी यूनिक होती है, बहुत यूनिक, राइट। दीस पीपल्स आर लाइक इन एडवर्ड सिंड्रोम्स में भी उनकी आंखें बल्जिंग होगी, नोज बल्ज हो जाएगा, या फिर बॉडी बहुत यूनिक होती है। इवन इनके फेस से सबसे जल्दी पहचाना जाता है। इनका फेस जैसे थोड़ा सा पिचका टाइप का रहेगा, ऐसे ऐसे देखा होगा। एक मैं टीवी शो देख रहा, उसमें ऐसे फेस को देखा। तो यहाँ पर जो ट्राइसोमी 18 है वो एक साइकोलॉजिकली ऐसे लोगों में डिसऑर्डर्स बहुत जल्दी होता है। देन ऐसे क्राइडी-चट सिंड्रोम, विलियम सिंड्रोम, राइट। विलियम सिंड्रोम्स इज रिलेटेड अबाउट इंटेलिजेंस। विलियम सिंड्रोम की खास बात यह है कि अगर उसको ट्रेनिंग दे दोगे कि मान लो मिल्क के दुकान पे उसको बता दोगे मिल्क लाने के लिए, तो रोज लाएगा। लेकिन अगर उसको मिल्क की दुकान की जगह पे परचून की दुकान पे भेज दोगे तो नहीं जाता। तो मींस जो विलियम सिंड्रोम की खास बात है कि वो जिस भी चीज की ट्रेनिंग दे दो बस वही। और ऐसे ही और भी हैं, जैसे पीकेयू, फिनाइल प्रोटेनेरिया। अब पीकेयू की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। सो व्हाट इज पीकेयू? फिनाइल प्रोटेनेरिया मींस जो आर्टिफिशियल स्वीटनर खाते हैं, ड्यू टू दैट हमारे बॉडी में एक सब्सटेंस पाया जाता है, और वो सब्सटेंस हमारी बॉडी में डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। और जब वो सब्सटेंस इंक्रीज करेगा, उसको मेलालाइन बोलते हैं, राइट। तो वो सब्सटेंस जैसे इंक्रीज करेगा तो वो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम हो जाएगा। बॉडी बहुत देखने में अच्छी लगेगी, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी पावर नहीं है। So PKU is increasing because of artificial sweeteners, बहुत ज्यादा हम लोग खाते। ऐसे हंटिंगटन सिंड्रोम, हंटिंगटन सिंड्रोम बेसिकली अगेन इट इज ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ब्रेन से रिलेटेड है। इसको हम हार्मोन टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। एक्चुअल में यूपीएससी बायोसाइकोलॉजी सिलेबस में दिया ही नहीं, ना तो पूछता है, कभी नहीं पूछता। सिंड्रोम्स वगैरह पहले एक दो बार पूछ रही थी, बट जब से रिवाइज सिलेबस आया 2014 ऑनवर्ड्स, तब से उसने कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जो कि बहुत एडवर्स हो, मुश्किल हो, नामुमकिन हो। तो शॉर्टकट में मीनिंग ये बना कि जो जीन्स है, जीन्स हैव सम बेसिक प्रिंसिपल्स। अब उस बेसिक प्रिंसिपल को बहुत डिटेल में साइकोलॉजी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है,
Even we can study, we can do from books, but again it is not important for UPSC. हाँ, इससे सिंड्रोम्स बनते हैं। सिंड्रोम क्या हो मैंने बता दिया, कुछ सिंड्रोम्स के नाम बता दिए। और सिंड्रोम से दो तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, बायोलॉजिकल सिम्टम्स एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। But our main concern to study the biological, no, psychological symptoms rather than biological. बायोलॉजिकल के लोग बायोलॉजी वाले पढ़ेंगे, हम अपना साइकोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ के चलेंगे। तो सिंड्रोम्स आर इंक्रीजिंग राइट नाउ, रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ genetic mutation is a very much continuous process. The reason being genetic mutations has been done by some biochemicals. आज लोगों के अंदर बायोकेमिकल्स बहुत सारे जा रहे हैं, even though we are consuming industrial chemicals also. So that is affecting our genes. Instead of that, radiation is one of the major reason behind the genetic mutations. Instead of that, our लाइफस्टाइल की वजह से भी हमारी अगर जीन्स को देखें उसमें भी मॉडिफिकेशंस हो रहा है। तो लाइफस्टाइल, फूड हैबिट एंड रेडिएशंस, these are the three major components which affecting our genetic process, right? So अगर नोट डाउन करना चाहो एक सेंटेंस लिख लो, कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। genetic mutation is a continuous process. Or gradual process, not a continuous, gradual process, but it is it is right now affected by consumptions of some chemicals. Example, one of the very popular, I hope you know, formalin. Formalin used for fish conservation, fish preservation. And instead of that, like we are using some other biochemicals that is very popular, Ajinomoto. So that it is affecting many more chemicals are affecting our genes. Maybe a radiation. Next is a radiation and lifestyle are majorly responsible for genetic mutations. Majorly responsible for genetic mutation means हमारे जीन्स में जो म्यूटेशंस हो रहे हैं उसके लिए हमारी ये सारी चीजें जिम्मेदार। So that many new disorders and syndromes are emerging. Many new disorders and syndromes are emerging. इसलिए नए नए डिसऑर्डर्स और सिंड्रोम्स एमर्ज होकर के बाहर निकल करके आते हैं। सो ये रहा जीन्स के कॉन्सेप्ट। अब सेकंड कॉन्सेप्ट किसके हमें पढ़ने हैं? हार्मोन्स। चलिए हेडिंग बनाएंगे हार्मोन्स कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू हार्मोन? Hormones are
biochemicals, and it releases mainly through the glands, right? We have a glands. So glands are basically in three categories in human being. One is exocrine gland, exocrine. Another is endocrine, endocrine, and there is mixed gland, mixed gland. So we have three types of glands are there. Hormones are mainly released by the glands. The glands whose secretions comes outside, that is called exocrine, like tear gland, sweat glands. So their secretions comes outside, and the glands whose secretions is basically inside. Inside means in blood system. That is called endocrine glands, right? And the glands whose secretion is basically out and in also, inside also. So that gland is called mixed gland. So we have three types of gland. Mixed glands, example like gonad glands. And there is pancreas. Pancreas is mixed gland, right? आउटसाइड में क्या स्पीड करता है? पैंक्रियाज से जूस निकल देना। आउटसाइड में क्या करता है? उस जैसे जूस निकाला, जूस निकाल करके वो जाएगा आप इंटेस्टाइन के अंदर और डाइजेशन करेगा, उसके बाद वो बाहर निकल आएगा। पैंक्रियाज से जूस भी निकलते और हार्मोन भी निकलते। जूस इज कॉल्ड एंजाइम। पैंक्रियाज रिलीजेस enzymes as well as hormone also. Like pancreas release which hormones? Insulin, blood sugar, insulin and glucagon. Insulin and glucagon have inverse function. Like insulin absorbs the blood sugars, whereas glucagons produce the blood sugars. So that we have two important glands, two important hormones. So endocrine glands have basically a networks, and these networks are spread into the whole body. Just we will take the human body is like this is a human body, like this is the human body, like this is. So human body have a basically जैसे बना like the brain have some glands that is called, नाम जानते होंगे, pituitary glands. That is the pituitary glands. Other is pineal glands. Pineal glands is there. In the neck region, that is thyroid glands, right? Thyroid is there, thyroid glands, and then there is parathyroid glands. Other is parathyroid glands. Other is what? In the stomach regions, right? There is again some hormone. Like there is above adrenal glands, adrenals, then pancreas, then there is the gonad glands. So we have different glands, and all these glands releases hormones, right? So initially you will write ह्यूमन, अगर लिखना चाहे समय लिख सकते हो, आपका मन करे, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ फिलहाल। Hormones are released by gland system. The hormones are released by endocrine gland system.
released by endocrine gland system. रिमेनिंग से डायग्राम वगैरह बना लें. These gland systems are stimulating gland system stimulating to release some hormones or inhibiting to release some hormone for the maintenance of comma productions and regulations of many behavior. Production regulations of many behaviors means many human behaviors are regulated, produced by the gland system. इनहैबिटिंग का क्या मतलब है यहाँ? Sorry, इनहैबिटिंग का क्या मतलब है? inhibiting means some hormones started to stop the releasing hormone. Example, if a mother is feeding, so definitely their mammary gland is active, but it also stopped to release after completing the feed of child. So there is again some hormone mechanism which is responsible to inhibit. Inhibit means stop करना, रोकना, right? तो कुछ हार्मोन्स ज्यादा किसी को स्टिमुलेट करके, जैसे मिल्क पीना तो भी स्टिमुलेट करना और मिल्क को रोकना तो भी इनहिबिट करना. ऐसे ग्लूकागॉन शुगर को अगर कम हो जाता तो प्रोड्यूस कर देता, और इंसुलिन अगर बॉडी में शुगर ब्लड शुगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको कंज्यूम करके. सो बोथ आर वर्किंग एट and these hormones are its impact is gradual and slow. Again I repeat, इसका gradual होता है and the hormone mechanisms are similar in all animals, so that the basic biological processes are similar in human beings. अब कोई पुरुष बोले या महिला बोले मेरे अंदर इस तरह की प्रोसेस नहीं होती तो बायोलॉजी उसको मानने का नहीं. जैसे कोई बोले कि मेरे अंदर सेक्सुअल अराउजल नहीं आता, ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा मीन्स उसके अंदर बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस नहीं हो रही है तो मीन्स वो एबनॉर्मल है बायोलॉजी की भाषा. राइट. अब टेस्ट ऑफ टंग का काम अगर टेस्ट करना ही है तो टंग को टेस्ट ना मिले तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब टंग में कुछ प्रॉब्लम है. टंग का जो फंक्शन वो करना ही चाहिए. सो हार्मोन मैकेनिज्म्स का इंपैक्ट मेनली अगर देखना चाहो तो टीनेज में देखा जा सकता है, और कुछ हार्मोन के रिलीजेस ज्यादा हो जाता है. जैसे वुमेन में कुछ गोनैड ग्लैंड्स अगर ज्यादा हार्मोन निकल रही है तो, या मेल में कहीं ज्यादा हार्मोन निकलते हैं तो उनमें बड़े सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं. और उनमें से प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, जैसे वेरी मच पॉपुलर प्रॉब्लम्स है कि बॉडी में एबनॉर्मल डेवलपमेंट, जैसे वुमेन हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा तो पीसीओडी की प्रॉब्लम, मेल हार्मोन इम्बैलेंसेस हो जाएगा तो उसमें स्टरलाइजेशन की सिचुएशंस या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो सकती है. थायराइड भी अगर ज्यादा हो जाता तो भी आपने देखा है कि कहते बेबी मत प्रोड्यूस कर, इसमें भी जेनेटिक इफेक्ट दिखाई पड़ सकता है. सो हार्मोन्स का इम्पैक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ में साइकोलॉजिकल प्रोसेस पर भी पड़ता है. टीनेज इज अ बिग एग्जांपल. बाकी और एज में भी होता है और हार्मोन की इम्पैक्ट भी है.
जैसे आजकल ये भी कहा जाता है आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे, और हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे तो फिर आप में डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा, राइट। So third essential component is neurotransmitters. Third is neurotransmitters. Neurotransmitters are basically biochemical, and these biochemicals are present between the two neurons. It is the biochemical, it is mainly present between two neurons, दो neurons के बीच में present, got it, between two neurons, and these neurons are in mainly 5 categories by their biochemicals. Like one is amine family, amine. One is amino acid family. Other is peptide family. Many families are. So these are the biochemicals on the basis of chemical family. But in other sense, neurotransmitters are excitatory and inhibitory. Excitatory means which enhance our behavior, which creates excitations in behavior, right? Like serotonin. Serotonin is the exciting neurotransmitter. Acetylcholine, acetylcholine, that is a acetylcholine is there. Acetylcholine is mainly responsible for the productions of learning and memory. Excitatory, yes. It means if you have good acetylcholine, like ACT, this ACT word, हाँ गलत हो गया इसको, ACTILECH, न्यूरोट्रांसमीटर की परीक्षा गलत NE MITTER होगा ER चलो वो सही कर लेना, yeah, right. So that's acetylcholine is a basically exciting neurotransmitter, right? Due to this, human have a very good learning. Means अगर किसी में acetylcholine ज्यादा निकल रहा होता है तो उसके अंदर ज्यादातर चांसेस है कि वो लर्निंग अच्छी कर पाता, मेमोराइजेशन अच्छा कर पाता. Other hormone is like serotonin. Serotonin is there. Serotonin is mainly responsible for mood regulations. Mood के लिए अच्छा. And some inhibiting neurotransmitters are there, like GABA. GABA's full form is gamma aminobutyric acids. This is mainly responsible for the depression and anxiety, sadness के लिए यही जिम्मेदार होता है. ये कॉज करता है हाँ बिल्कुल कॉज करता है नेगेटिव. This if its amount will decrease, basically depressions will come short very commonly in that area. And there is जो GABA के बाद एक और होता है that is very popular है, सेरोटोनिन एक बहुत पॉपुलर है, तो डोपामिन. यस, डोपामिन इज अगेन इट इज रिस्पांसिबल फॉर द mainly एंजाइटी एंड मूड रेगुलेशंस. इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है. अगर डोपामिन घट जाएगा तो भी प्रॉब्लम, बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम. अगर डोपामिन बढ़ गया तो मीनिया की प्रॉब्लम आ जाएगी, पर्सन बेवजह हंसता रहेगा. और अगर
घट गया, डोपामिन बॉडी में कम हो जाता है, तो उस केस में ज्यादातर उसमें डिसऑर्डर्स आ जाता है, दैट इज वी कॉल देम स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत कम हो जाएगा तो स्किज़ोफ्रेनिया। सो means neurotransmitters are biochemicals. They are in two categories. They are regulating, developing, and producing many behaviors like mood disorders and learning, thinking, problem solving, etc. But why we are not doing in detail? Reason being because it is not in our syllabus. Otherwise, in एक महीना पढ़ाता हूँ मैं बहुत ज्यादा है डिटेल में। अब न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर सबसे पहले नर्व सेल्स पढ़ना पड़ता है, नर्व सेल्स के टाइप्स होते हैं, नर्व सेल्स की फंक्शनिंग, उसके बाद उसमें नर्व इंपल्सेस पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है नर्व इंपल्सेस। फिर नर्व इंपल्सेस के अंदर भी बड़े सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे लॉज हैं। फिर नर्व इंपल्सेस के बाद साइनॉप्टिक्स, साइनॉप्टिक्स वो रीजन है जहां पर दोनों केमिकल्स दो सेल्स मिलते हैं, उसी के बीच में ही न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होता है, दैट इज मेनली एट द रीजन ऑफ एंड ब्रश। तो पूरी नर्व सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, टाइप्स समझने में भी बहुत टाइम लगता है, बिकॉज इट इज अ डिटेल टॉपिक ऑफ न्यूरोसाइंस। सो पहले बायोसाइकोलॉजी नहीं कहा जाता था, पहले न्यूरोसाइकोलॉजी ही कहा जाता था, बट बाद में साइकोलॉजी से इसको मॉडिफाई कर दिया, बोला नहीं सर यहाँ से बात नहीं बनेगी। एंड थर्ड पार्ट, fourth part is brain. So fourth segment is brain. Brain was studied by many biologists, neuropsychologists, by the several methods. Like brain and its behavior is studied by many methods. Example: CT scan, tomography, CAT scan, PET, MRI, fMRI, and then histological method. Means there is a several method by which we try to understand brain and its relation with psychological processes. Right? एक लाइन लिख लो. Brain is one of the most important human organs which decides which affects many psychological processes, which decides many psychological processes. Which decide many psychological processes. Number one, which decide many psychological processes. Like, you must have basic understanding of brain. How many parts of brain? 3 main parts. First is forebrain, midbrain, and third is hindbrain. Forebrain has 5 main parts. Like, one is amygdala, other parts is thalamus, hypothalamus, that is frontal lobe, no, that is cerebral cortex, and one more I think एक और है, वो ध्यान नहीं आ रहा. And while we go to the detail of the cerebral cortex, it has 4 main lobes.
that is the frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, and temporal lobe. So there is a different lobes are there. So mainly psychological processes are decided by forebrain. Midbrains are basically working as a connector between the forebrain and midbrains. Hindbrains are mainly controlling somatic processes. Somatic processes means bodily processes. Like in a hindbrain, in a midbrain, like two parts, tectal as well as tegmental. And hindbrains have mainly 4 to 5 parts, like pons, medulla, pons only, medulla, and then cerebellum, and RAS is there. RAS sometimes it is a part of membrane also, reticular activating system, right? So there is a several parts, and each part of the brain have some specific function that are mainly the source of psychological process. ह्यूमन ब्रेन को तो समझना साइकोलॉजिस्ट को बहुत क्यूरियस टॉपिक लगता है एंड ह्यूमन ब्रेन साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल और इसको बहुत तरीके से मैंने कहा ब्रेन को समझने के लिए एमआरआई, एफएमआरआई, पैट, कैट, टोमोग्राफी, लॉट ऑफ बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करके ह्यूमन ब्रेन साइकोलॉजी समझना चाहते हैं। गॉट इट? तो प्रोसेस करें इसको, अगर एक दो सेंटेंस लिखना चाहो तो लिखो। इट इज वन ऑफ द मेजर पार्ट which have several sub parts, it control many biological psychological processes. Example, frontal lobe mainly thinking को regulate करता है। frontal lobe thinking, एक मेन लिख लो बस, like pons and medulla for facial expressions, mainly pons आता है इसमें। pons यानी पोंड, पोंड मतलब क्रीम, क्रीम कहाँ लगाएंगे? फेस पे, तो फेस का मतलब फेस। मेडुला मींस हिला डुला, जो चीज अपने आप बॉडी में चलती है उसे मेडुला है। जैसे हार्ट बीट, पल्स रेट कंट्रोल बाय मेडुला, autonomic nervous systems are controlled by medulla. So pons medulla controls mainly facial system, and next hypothalamus regulate our sleep, emotion, motivation, etc. RAS is mainly responsible for sleep and arousals, etc. Means many more parts they are inside of our body. They are controlling and they are developing the psychological processes. तो ब्रेन का भी कॉन्सेप्ट इतना, गॉट इट? बस इतना ही रहने दो। सो आगे इसमें हेडिंग हम क्या बनाएंगे? अगला सेगमेंट की हेडिंग बनाना, इनके मेथड्स या इनका फोकस एरिया लिखिएगा। फोकस एरिया ऑफ बायोलॉजिकल अप्रोच। बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट mainly focus on developmental psychologist, या developmental psychology, perception, psychotherapy and psychopathology. These are the main focus area where they worked.
that are the biological psychologists. Then what are their methods? Definitely they use only one method, that is experiment method. Means biological psychologists used and collect the data by the uses of experiment methods. So they have very good experimentations and they have collected very good data from the several sources. Next part. Then what are their major works? Major works again हमने डिस्कस ही कर लिया कि इन्होंने जो वर्क्स किया है हार्मोनल सिस्टम्स इन्होंने पूरा समझाया हार्मोनल सिस्टम्स एंड इट्स इम्पैक्ट्स ऑन बिहेवियर, इसी को एंडोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। एंड न्यूरोसाइकोलॉजी they studied syndromes, they इनके मेन वर्क्स में आते हैं, राइट। जीन्स एंड बिहेवियर स्टडीड बाय मेनी साइकोलॉजिस्ट, आपको डेवलपमेंट में पूरा पढ़ेंगे। इवन हर टॉपिक्स में डिबेट आता है नेचर वर्सेस नर्चर। सो नेचर एंड नर्चर का डिबेट इन्हीं के लिए होता है कि कैसे हमारा जीन्स और हार्मोन हमारे बहुत सारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन इसके एप्लीकेशंस means biopsychology is applied to understand the basic process of psychology. Basic psychological process भी बोल सकते हैं। Basic psychological process means these psychologists mainly works on basic psychological processes. Got it? Example: hunger, motivation, thirst, sleep, sex, इन सब की साइकोलॉजी समझने में यूज करें। And it is used to treat many diseases also, like by the gene therapy. Psychiatrists use genetic therapy to treat many syndromes like criminal syndromes. Criminal syndromes mainly present in males. कई पुरुष में अपराध का स्वभाव पाया जाता है, क्रिमिनल नेचर है। तो criminal syndromes understand by the psychologist. Other इसका एप्लीकेशन ये है कि डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर को समझने में होता है। डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, एग्जांपल इन इन्फेंसी एज में इंसान कैसे बिहेव करता है बच्चा, चाइल्डहुड एज बिहेवियर्स, एडोलसेंट बिहेवियर, एजिंग बहुत इसको जरूर कॉपी में रखना है। एजिंग इज बेसिकली एजिंग एंड वेलबींग का कॉन्सेप्ट ही है, तो उसमें हेल्थ साइकोलॉजी आता है, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे हैप्पीनेस। पेपर 2 का एक टॉपिक है पॉजिटिव साइकोलॉजी और वहीं पर पढ़ते हैं हम लोग गॉट इट, इतना ही। देन अब इसके मेरिट्स क्या थे? What are the merits of biological approach? Merits of biological approach. The biggest merit of the biological approach, their research and studies are mainly valid because of their methods, because of their technologies. So their research studies are valid. Means if Broca region has been identified by Paul Broca, so Paul Broca has definitely done experiment. Right? And similarly
इनकी दूसरी बड़ी एडवांटेज ये थी कि इन्होंने मॉडर्न जितने भी मॉडर्न साइंस के सिस्टम थे उसका भी इस्तेमाल किया. दे यूटिलाइज मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर. मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स बॉक्स में डाल देना, एमआरआई, कैट स्कैन, सिटी स्कैन, एक्सेट्रा. तो एक बड़ा एडवांटेज ये था बायोसाइकोलॉजिस्ट का. अब इसकी डिसएडवांटेज भी है. Disadvantage means they did not they did not given any importance. Yeah, they don't have given any importance to the environments because they believe totally behaviors are formed by the human biological processes. तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस सिर्फ उसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से ही बिहेवियर बनेंगे? ये तो कोई जरूरी नहीं. तो ये गलत हो गया. एंड दूसरा ड्रॉबैक ये था their studies were mainly case study like. इनकी जो स्टडीज थी वो केस स्टडी लाइक थी. एक की स्टडीज को सब पे लागू करते थे, बट ऐसा नहीं. जैसे ब्रेन के बहुत सारे जो रूल्स बताए ऑब्जेक्टिव स्टडी जी, और मींस ऑब्जेक्टिविटी या कल्चरल इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है. ऑब्जेक्टिविटी प्रॉब्लम और कल्चरल इफेक्ट देखने को. देयर इज अ प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड कल्चरल इफेक्ट्स. कल्चरल इफेक्ट्स हमारे इंटेलिजेंस पे जरूर पड़ता है या हमारी लर्निंग पे, मेमोरी पे. इन्होंने उसको कभी समझा नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं. एक ड्रॉबैक बहुत बड़ा इनका है. तो बस बायोलॉजिकल अप्रोच में इतना है. अब एक बार इसको रीडिंग करना है और रीडिंग करके बस इसमें 5 to 7 लाइन मैक्सिमम प्रोड्यूस कर लेना है अपने आप से पूरी समझ के बाद. इसके अलावा इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम लोग. नेक्स्ट इज that is the existential approach. Existential approach. It is called existential psychology. As you have seen, as we mentioned from the religion, जब रिलीजन आया तो रिलीजन से दो चीजें लिबरेट हुई. वन लिबरेशन इज साइंस. एक लिबरेट होकर के साइंस बना और दूसरा वहां से फिलॉसफी बना. फिलॉसफी. तो दो लिबरेट हुई चीजें इस धरती पर ग्रो करना शुरू. वन इज साइंस, अदर इज. बट इसमें प्रॉब्लम थी. अच्छा, जो साइंस थी वो स्ट्रक्चरलिज्म के लोगों ने अपनाया, फंक्शनलिज्म के लोगों ने, बिहेवियरिज्म के लोगों ने, और आगे वो ग्रो करते चले. बट जो फिलॉसफी था, फिलॉसफी मेनली चूज बाय फर्स्ट, थोड़ा बहुत तो फंक्शनलिज्म के लोगों ने, बट मेनली जो साइंस फिलॉसफी था अगेन चूज बाय ह्यूमनिज्म्स and the highest choose by the existence. Highest philosophy used by existence. Functionalism. Functionalism में भी शुरू के फिलोसोफर ही थे. Then humanisms. Then they
तो ये चीजें यहाँ से लिबरेट होना शुरू हुआ. So existential psychologists are mainly philosophers. Existentialism again importance because psychologists को लगने लगा कि जो रिलीजन्स है, रिलीजन से साइंस जरूर प्रोड्यूस हुई, बट फिर भी रिलीजन को साइंस खत्म नहीं करता. It means in a religion, some processes are scientific and some processes are very much essential for the human life. तो फिर साइकोलॉजिस्ट के जो लोग थे, उन्होंने फिलॉसफी और रिलीजन को एक साथ देखना शुरू. यहाँ से कॉन्सेप्ट उन्होंने निकाला पैरानॉर्मल साइकोलॉजी. आपने सुना होगा पैरानॉर्मल साइकोलॉजी, द साइकोलॉजिकल ब्रांच व्हिच डील्स मेनली द रिलीजन्स, फिलॉसफी एंड घोस्ट एंड एक्सेट्रा. जो जिन वगैरह की चीजें आती है, बिकॉज साइंस में भूत प्रेत ऐसी चीजों को तो एक्सेप्ट भी नहीं करता, या मिरेकल्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन दिस. पर जो रिलीजियस और फिलॉसफी में एक चीज बहुत बेहतरीन थी, सम बिग गोल्स. सम बिग गोल्स आर बेसिकली रेगुलेटेड बाय एंड डेवलप्ड बाय रिलीजन एंड फिलॉसफी. जीवन के जो छोटे छोटे गोल है, जैसे मान लो पैसे कमाने, तो छोटा गोल है, बट जीवन में आपको हैप्पीनेस चाहिए. तो हैप्पीनेस, अब फिलॉसफी और रिलीजन के लोग कहते हैं कि कभी भी आपको मटेरियल से नहीं मिल सकता. सो दीस साइकोलॉजिस्ट्स वर अगेंस्ट ऑफ इट कि वी कैन गेट द हैप्पीनेस बाय द साइंस. ये लोग बहुत अगेंस्ट थे, नहीं चाहते थे, बिल्कुल कहते थे कि ऐसा होगा ही. तो इन्होंने यही चीजें आगे चल के एग्जिस्टेंशियलिज्म के लोगों ने बहुत डिटेल में समझाया एंड बताया कि जो हमारी लाइफ के बिग गोल्स होते हैं, दैट आर द मेजर सोर्स टू डिसाइड्स आवर बिहेवियर. गेटिंग? पहला पॉइंट, existential psychologists are mainly philosophers. Existential psychologists are mainly philosophers. They are mainly philosophers. They are mainly philosophers. Existential psychologists के ज्यादातर लोग क्या थे? And they select some big themes of life to study as a psychological process. ठीक है, तो इन्होंने कुछ बड़े-बड़े themes लिए. The founder of existential psychology was mainly Kierkegaard. लिख देना, लिखा नोट्स में. Kierkegaard was founder of existential psychology. Even many thousands of the psychologists are there जिन्होंने जीवन को समझना चाहा. Those who want to understand the life. One of them, Viktor Frankl. Viktor Frankl तो बहुत अच्छे से थेरेपी बनाते हैं, लोगो थेरेपी. रोलो में ने तो बहुत सारी किताबें लिख डाली. रोलो में को पढ़ेंगे तो मजा आ जाए. एंड अगर आपने ह्यूमनिज्म समझा होगा, तो ह्यूमनिज्म का ही एक्सटेंशन है, दैट इज एग्जिस्टेंस. ह्यूमनिज्म के लोग नीड पे काम किए, तो नीड से ही ये आगे एक्सटेंड होकर के बिग गोल ऑफ लाइफ हो सके. अब वो बिग गोल ऑफ लाइफ कौन कौन सी थी? फर्स्ट था डेथ. फर्स्ट इज डेथ. मीन्स every individuals want a good death, and good death is one of the key controller of human behavior and mental process.
because every religion explain well about the death. जैसे आपको अगर अच्छे डीड करोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे एक्शंस और बिहेवियर करोगे, तो आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी। हिंदुइज्म में स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्रिश्चियनिटी में हेवन की प्राप्ति होगी, बौद्धिज्म में निर्वाणा, एंड देन ऐसे जैनिज्म में मोक्ष की प्राप्ति। सो अल्टीमेटली सब रिलीजन कहना चाहते थे कि इफ यू वांट अ गुड डेथ, so you need to control your actions, you need to control your behavior, because heaven and hell concept is existing in every religion. तो कौन से चाहिए आप, स्वर्ग चाहिए, नरक चाहिए? if your actions and mental process are maladaptive, so definitely will not get a good life. Like if you are taking alcohol, alcoholism is a type of addiction. आप में सब्सटेंस एडिक्शन है तो आपको तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए एवरी रिलीजन्स बैन टू कंज्यूम अल्कोहल। नहीं कहता, कहता मत खाओ। लाइक बहुत सारी ऐसी एडिक्शन वाली चीजें, ग्रीड की चीजें जो ह्यूमन बिहेवियर्स को चलाती हैं, उनको रिलीजन्स कहता कंट्रोल करो, नहीं तो तुम्हें अच्छी मौत नहीं मिलेगी। So death is not a small psychology, it's a big psychology, because it's the conclusion of the life. So death control entire psychology of the life, पूरे जीवन की साइकोलॉजी को कंट्रोल करता है, not a one day psychology, not a day by day psychology, right? So second big goals is the meaning of life, meaning of life. Being a human, we want to create some meaning of our life. By how? By our actions, by our mental process. Like when an individual will become IAS officer, so definitely their actions, their behavior will never die, because those initiatives which was taken by Robert Clive, those initiatives taken by the William Bentings, definitely that is existing right now. They were IAS officers. So if you are going to give good meanings to your life, so you will definitely do good actions, good behaviors in society. Got it? तो इंसान के behaviors, इंसान के mental process उसके जीवन को कंट्रोल करता है, इसका मीनिंग ऑफ आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, आपके जीवन का पर्पस। जब अगर आप ये मान के चलेंगे जीने के 4 दिन बाकी बेकार है, you will consume alcohol। बट नहीं, मुझे एक अच्छा जीवन जीना, एग्जाम्पल वाला जीवन जीना है, so we'll definitely prepare UPSC, good, right? तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा जीवन जीना चाहते, किस तरह की मीनिंग क्रिएट करना चाहते। एंड थर्ड इज आइडेंटिटी, identity. So existential psychology says that everyone have a hunger of identity and want to create identity by their actions and behavior. पहचान बनाना चाहिए। Like if someone become politicians, so want to create his identity among the people, so that definitely person will move toward the good works. Other is freedom. फ्रीडम हर रिलीजन में कहा गया। बुद्ध ने भी कहा कि अगर इस जीवन साइकिल से फ्री होना चाहते तो आप अपने एक्शंस को अच्छा रखें। एंड सिंपल वर्ड्स इन जो फ्रीडम को वेस्टर्न फिलोसफर ने डिफाइन किया, वी वांट सम फॉर्म ऑफ लिबरेशंस, लिबरेशंस ऑफ डिजायर्स, थॉट, कंजम्पशंस, हर चीज से हमें आजादी चाहिए।
कई बहुत सारे एक्शंस और बिहेवियर्स हम इसलिए जीवन में कर रहे होते हैं बिकॉज हमें क्या चाहिए, लिबरेशन से, फ्रीडम से, आजादी चाहिए। गेटिंग? और बहुत इंटरेस्टिंग है, हम इस फ्रीडम को पाने के लिए, जैसे मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा कोविड आए तो भूखा रहे, क्यों रहेगा? क्योंकि हमें उसे कोविड की प्रॉब्लम से फ्रीडम चाहिए, भूख से आजादी चाहिए। सो फॉर दैट ह्यूमन बिहेवियर्स, जैसे बहुत, जैसे मंदिर में लोग क्यों जाते हैं, बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल बीमारियां थी उससे फ्रीडम चाहिए, या बहुत सारे जो बुरी आत्माएं थी उससे फ्रीडम चाहिए। इवन अपने पूर्वजों को भी, जैसे हिंदुइज्म में आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने शरीर की दे देते हैं, जैसे हमारे शरीर में सबसे खूबसूरत चीज होता है हमारा बाल, तो हिंदुइज्म में अपने बाल को भी निकालने का कॉन्सेप्ट है, और उसकी साइंस भी कि बारिश के पहले बाल निकला देने से अच्छा हो जाता है, क्योंकि बारिश के बाद बाल बहुत तेजी से निकलते हैं, बारिश के साथ बाल बहुत तेजी से निकलते हैं। तो कितनी बेहतरीन साइंस थी। ऐसे दिवाली मनाई गई तो कब मनाई गई, जब खेतों में पीस लगना शुरू होते हैं, राइट? तो ऐसे फेस्टिवल्स, होली मनाया गया तो पीस किस टाइम में मनाए, जिस समय खेत में कीड़े मकोड़े लग रहे हैं और फसल तैयार हो रही है। एक बार नवंबर फसल तैयार होगी, दो उसमें भी फायर और लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट है, और होली में भी फायर और लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट है। कितने बेहतरीन कॉन्सेप्ट। मड को लपेट लेना, मड क्यों लगाते थे उस समय कलरफुल होता नहीं था, वो इसलिए लगाते थे बिकॉज दे आर बेसिकली, जैसे हम आजकल फेस के ऊपर अलग अलग थेरेपी करवाने जाते हैं, क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो फेस को रेडी करते हैं अगला सिचुएशन को फेस करने। तो किसान के घर में यही होता है, जैसे पहलवान तेल से ज्यादा अपनी पहलवानी के समय मिट्टी से खेलता है, मिट्टी की मालिश करवाता है। Have you seen that? So that is happening. तो ये चीजें, फ्रीडम चाहिए, लिबरेशन चाहिए, आजादी चाहिए। एंड सो ऐसे इन्होंने गोल्स बनाए, एंड दीज गोल्स आर द बेसिकली ड्राइविंग फोर्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ये छोटे मोटे गोल्स नहीं है कि मुझे नौकरी जब स्मॉल साइकोलॉजी, इनकम इज स्मॉल साइकोलॉजी, मतलब इनकम भी हमारी साइकोलॉजी को सेट करेगा, नौकरी चाहिए भी साइकोलॉजी को सेट करेगा, ऑफिसर बनना है भी साइकोलॉजी को बनाएगा। लेकिन बड़ी बड़ी जो मेजर साइकोलॉजी कौन बना रहे हैं हमारे जीवन का, हमारा एग्जिस्टेंस। सो बिग साइकोलॉजीज आर क्रिएटेड बाय आवर एक्जिस्टेंशियल इवेंट्स। So these are the goals set by the psychology, and these goals were mainly utilized, enhanced, and developed in modern science by two great psychologists. One is Viktor Frankl. Viktor Frankl. तो विक्टर फ्रैंकल ने इसको पॉपुलर बनाया। उसने कहा लोगोथेरेपी, उसने कहा आप एंजाइटी से परेशान हो, आप डिप्रेशन से परेशान हो, मूड डिसऑर्डर हो रहा है, कोई बात नहीं, सिर्फ आप अपने जीवन के वैल्यूज को चेंज कर लो। मींस विक्टर फ्रैंकल एनसीईआरटी में दो लाइन बहुत अच्छा लिखा, उसने क्लियरली मेंशन है कि इफ द वैल्यूज and the meaning of life are defined, then your many disorders will automatically eliminate. अगर आप छोटे छोटे गोल्स को लेकर के परेशान रहोगे तो डिप्रेशन एंजाइटी जरूर देगा। एग्जाम्पल, एक प्रोजेक्ट करना 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, उसमें रिसोर्स नहीं होगा, प्रॉब्लम्स होगी, तो निश्चित तौर से दिक्कतें होंगी, और 6 महीने मुश्किल के दौर गुजारने पड़े। पर विक्टर फ्रैंकल कहता है कि उसको भी ठीक ऐसे समझो कि जीवन का एक हिस्सा, जिससे हमारे घरों में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सारे रिलेटिव आते थे, क्यों आते थे? तो एक ही लाइन बोलते थे, देखो प्रकृति का नियम है। मैंने अपने घरों में देखा
जब भी किसी की डेथ हुई थी, तो उसमें हमारे घर में गेस्ट आते थे, मीन्स रिलेटिव आते थे, कभी कभी कोई दिन आता, कोई किस दिन आता था, तो लोग अभी भी होता सर बातें करते, हमें दुख होता तो कहते रोने देते। अच्छा, जब वो आप रोते हैं या दुख बताते हैं तो सुनते हैं, और एक ही लाइन लास्ट में बोलते, देखो प्रकृति का नियम है, ये होना है, जो होते वो करते। सो दैट इज विक्टर फ्रैंकल थ्योरी। कुछ प्रकृति के रूल्स हैं, उसको एक्सेप्ट करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं होगी, but if you will not accept that is universal, then definitely there will be suffering and problems. So look, and then second great psychologist was Rollo May. Psychologist name was Rollo May. जून पिछला महीना था, आप पिछले महीने वाले रोलो में। So रोलो में क्या कहता, बड़ा खूबसूरत पॉइंट। रोलो में was an American psychologist. Actually, he has popularized existentialism in the era of science. जब साइंस कॉग्निटिव बायोलॉजिकल अपने आसमान चरम पर है, खूब बड़े हो गए, उस दुनिया में भी रूलों में किसको पॉपुलराइज कराने की कोशिश करता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म, एंड ही वाज सक्सीडेड। एक्चुअल में सफल भी रहा, बिकॉज लोगों को समझ में आने लगा। इवन कार भी खरीदते हैं लोग तो इसकी पूजा करते हैं। इवन इट इज साइंस, कार अगर फेल होगी तो साइंस की वजह से फेल होगी, बट कार अच्छी चले, ईश्वर आप। सो ऐसे बड़ी से बड़ी, इवन स्पेस का मिशन जा रहा है, नासा के साइंटिस्ट भी लाइक दैट, गॉड इज व्हाई दे आर सेइंग, क्यों कह रहे भाई? A reason being because कि जो लाइफ है, लाइफ में मैंने कहा फिलॉसफी और रिलीजन्स की इंपॉर्टेंस को साइंस ने कभी कम नहीं करना है। और विक्टर फ्रैंकल या रोलो में जैसे साइकोलॉजिस्ट जो कि इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत तरह से बढ़ाते हैं, लाइक Rollo May has worked on the existentialism and written more than 25 plus books in psychology. 20 से 25 किताबें उसने लिखी थी इसके ऊपर, existentialism 25 plus, और 25 किताबें बहुत हो गई। लाइक उसने थेरेपी लिखी, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, उसने लव एंड विल्स के ऊपर कुछ लिखा। इस वेरी फेमस कॉन्सेप्ट इज लव एंड विल्स। उसने कहा लव एंड विल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ही हैज मेनली वर्क्स ऑन वैल्यूज। उसने एक बुक लिखी, बुक का नाम था उस बुक में, वो बुक का नाम थोड़ा उसमें शायद नोट्स में मेंशन होगा। उसने क्लियरली मेंशन किया कि जो 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी दुख की बात क्या है। The biggest sin of the 21st century is the declining of morals and values. उसने बोला 21वीं सदी में सब कुछ बढ़ रहा है और बढ़ी जा रहा है, लेकिन एक चीजें घट रही है, वो है morals, values. तो morals and values are declining. और जिस सोसाइटी में morals and values खत्म हो जाएंगे, वो सोसाइटी बहुत जल्दी खत्म। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सोसाइटी है, they have a very good morals and values. Like earlier leaders were too much moral. They have high values. They have a high interest in societies. जो गल्फ की सोसाइटी थी उस समय, ईरान, इराक, टर्की, अफगान, इन सोसाइटी में एक ही चीज की दिक्कत थी,
वो था बेसिकली मोरल्स वैल्यूज, क्योंकि रिलीजन्स उतना एंशिएंट टाइम में तो था, और जो इनके वैल्यूज थे वो एक दूसरे को बहुत जल्दी कैटर कर जाते, सो दैट इनकी सोसाइटी बहुत जल्दी से डायनेमिकली चेंज होगी। बट इंडियन सोसाइटी में डायनेमिक चेंजेस नहीं है। इफ यू हैव सीन, एक बार बड़ा ऑटोक्रेटिक सिस्टम बनाने में लगभग कितने साल लगे? एट द टाइम ऑफ बुद्ध मीन्स बुद्ध के समय से लेकर के एट द टाइम ऑफ राजपूत बड़े सिस्टम बनाने में काफी टाइम लगा। और फिर दूसरा सिस्टम हिस्ट्री में बना, इस्लामिक सिस्टम। इस्लामिक सिस्टम बनाते बनाते भी उन्होंने अराउंड 700-800 साल लिया, एंड ब्रिटिश का सिस्टम बनाते बनाते भी उन्होंने फिर से लगभग 300-400 साल लिया। बट फिर भी जो इंडियन एंशिएंट ट्रेडिशनल वैल्यूज थे उसको खत्म नहीं करना। मीन्स राजा चोला क्या नाम, राजा राजेंद्र के समय की जो बहुत सारे टेम्पल थे, स्टैचूज थे, वो आज भी वर्क कर रही है। टेम्पल्स आज भी हैं, उनमें उतना ही प्रेयर होता है। सो दैट्स आई वांट टू से कि जिस सोसाइटी में वैल्यूज रहेगा, मोरल्स रहेगा, वो सोसाइटी बहुत लंबा एग्जिस्ट करेगी। और जिस कंट्री में रिलीजन ज्यादा होगा वो कंट्री में ज्यादा वैल्यूज एंड मोरल्स। तो विक्टर फ्रैंकल इस रोलो में इसी बात को लेके परेशान है कि लोग 21st सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, साइंस को आगे लेके जा रहे हैं, रिलीजन को पीछे बैकबोन या पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस, बट 21st सेंचुरी में जब मोरल खत्म हो जाएगा तो ह्यूमन रिलेशन ब्रेक। ईस्टर्न सोसाइटी आर मोर मोरलफुल देन द वेस्टर्न सोसाइटी। ये रोलो में की स्टडीज, तो रोलो में के कॉन्सेप्ट है। अब आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं? सम ऑफ द मेन साइकोलॉजिस्ट, जैसे इसमें नाम लिखे होंगे, देखिएगा रोलो में विक्टर फ्रैंकल, हाँ, और नहीं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा कि सबसे पहले आपको एग्जिस्टेंशियल की मीनिंग पता होनी चाहिए। एग्जिस्टेंशियल मीन्स द साइकोलॉजिस्ट who deals basically the big goals of our life, like this. These are the major sources to set our दूसरा पार्ट। अब इसके इनके मेथड कौन कौन से थे? इनके मेन फादर का नाम पता चल गया, कई 2-3-4 साइकोलॉजिस्ट के नाम पता चल गए आपको, और फिर इसके बाद इनका मेथड क्या। मींस आपको मैंने बताया कि एग्जिस्टेंशियलिज्म से ही ह्यूमनिज्म इज कॉल्ड थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। क्यों कहा जाता है पता? फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी इज बिहेवियरिज्म, क्योंकि उन्होंने कॉसेस और एनवायरनमेंट को कनेक्ट करके साथ बैठे पढ़ाई। सेकेंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी इज साइकोएनालिसिस, एंड थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी इज ह्यूमनिज्म। तो जो ह्यूमनिज्म की आइडियोलॉजी थी उसी को एक्सटेंड किया इन्होंने। तो ह्यूमनिज्म यूज्ड मेनली व्हाट मेथड? केस स्टडी। तो इन्होंने भी कौन सा मेथड यूज किया? केस स्टडी। तो इसमें एक पॉइंट लिखेंगे, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट यूज्ड case study method, later they used experiment method to understand human behavior.
एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट शायद सुना होगा आपने, बहुत फेमस, एक आपको मैंने शायद बताया था डेथ वाला, जिसमें पॉइजन दे रहे थे उसको, याद है? बताया नहीं? साइकोलॉजिस्ट एक पर्सन को जिसको फांसी की सजा हो गई, उसको मरना था, तो साइकोलॉजिस्ट लोगों ने कहा कि अब इसको मरना ही है जज साहब, तो मुझे दे दो, हम लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ये वाला याद है ना? अच्छा, तो अब उसको मरने के लिए वो भी बोला ठीक है, मरना तो है ही है, फांसी से भी मरूंगा, इसलिए किसी के काम आकर के ही मरता हूं। तो साइकोलॉजिस्ट ने उससे कहा, ले आया और उसको बोले कि देखो हम आपको जहर देंगे, पॉइजन देंगे और उस पॉइजन से आपको मौत हो जाएगी। तो पॉइजन्स को उन्होंने बाउल में, जैसे होता है ना पानी और उसके साथ ले जाकर के बाउल में दे दिया पूरा, क्योंकि पानी के साथ मिला के देना था तो दे दिया पानी, और उसके बाद उसको उसने पी लिया, और पी लेने के बाद उसकी मौत हो गई। इसका पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसके बॉडी के अंदर जहर था, जिस जहर के बारे में साइकोलॉजिस्ट ने बताया, बट एक्चुअल में उसको कोई भी जहर नहीं था। तो साइकोलॉजिस्ट ने कंक्लूजन निकाला कि ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है वो सारे टॉक्सिक मटेरियल प्रोड्यूस कर सकती है जो बॉडी को जिस तरह से ट्रेन किया जाएगा। क्लियर? कैसे? इस चीज को इफेक्ट बोलते हैं। स्ट्रोबो कौन सा? इस चीज को जो होता है इसका एक नाम है ना, अब मुझे ध्यान नहीं, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट वाला है, राइट? तो ये उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक फेमस एक्सपेरिमेंट और था, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट ने किया। उन्होंने कहा कि हम एक सेशन करते हैं, और सेशन करने के लिए बहुत सारे मेल फीमेल और सब लोग आए, इकट्ठा हो बैठ गए, और बहुत सारे जो लोग बैठे थे, शायद ये वाली बताई थी, नहीं बताई थी, नहीं, ओके, अच्छा फिर लगता है कहीं और बताई, अभी एक दो दिन पहले बताई होगी, इसीलिए मुझे याद आ रहा है कि बताई। तो वो सारे लोग सेशन करने से पहले बोले कि ठीक है, हम बड़ी कुछ अच्छी बातें बोले, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने एक महिला को बुलाया और बोर्ड पर बड़ा सा बोर्ड दिया और बोले कि इसमें जो जो नाम आपको दिमाग में आते हैं लिखो। उसने अपने मदर, ब्रदर, भाई, सिस्टर, अंकल, फ्रेंड सबके नाम लिख डाले। लगभग 150 नेम्स ही हैज रिटन ऑन द बोर्ड। और जब वो बोर्ड पे सारे नाम लिख देती लेडी, अब कहते हैं कि देखो इसमें इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आप नाम मिटाओ, पहले 5 नाम मिटाओ, तो कम बहुत दूर दूर के थे, हम भी मिटा देंगे, मतलब मिटाने का मतलब क्या अलग हो जाना। फिर दूसरी, सेकंड, थर्ड, देन ऐसे बार बार शी वाज डूइंग रिपीटेडली, शी वाज रिपीटेडली eliminating the names। अब वो लास्ट में जाते जाते 5 नेम उसके सामने बचे। फर्स्ट मदर, सेकंड फादर, थर्ड हस्बैंड एंड फोर्थ उसके 2 बच्चे, फोर्थ एंड फिफ्थ दो उसके बच्चे। अब साइकोलॉजिस्ट ने कहा इनमें भी 2 नाम मिटा दो आप। She was in confused, इसका नाम मिटाएगी नहीं, उसने अपने मदर फादर का नाम मिटाया। उसने पूछा आपने मदर फादर को क्यों मिटाया? बोला देखो मैं बेटी हूँ, मेरा घर, मेरा परिवार, तो मतलब भारी मन से मिटा दी, मैं अपने माता पिता को छोड़। अब साइकोलॉजिस्ट ने कहा इनमें से भी कोई 2 नाम मिटा दो। वो बहुत भारी, it means she have only 2 choice, one is
कि husband other is two kids, या तो दोनों किड्स का बेटा या तो दो एक हस्बैंड एक किड का। अगेन अब वो बहुत देर तक सोच रही है, सोचते सोचते उसको रोना आ गया और रोते समय आखिर उसने दो नाम मिटा दिए दोनों बच्चों का। तो उसने पूछा, बाद में पूछा गया कि आखिर आपने क्या लॉजिक अपनाया कि जिसकी वजह से आपने हस्बैंड के भी नाम को मिटा दिया। सो उसने एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया कि हमारे अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, या मेरे जीवन के लिए जरूरी क्या है? हस्बैंड। बच्चे की एक समय के बाद मैरिज हो जाएगी, वो अपने जीवन में बिजी हो जाएंगे, उनका अपना जीवन होगा। लास्ट मोमेंट में जब हमें एजिंग की जरूरत पड़ेगी, सपोर्ट की, मेंटल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो सपोर्ट हमें हमारा हस्बैंड ही देगा। और एक फैक्ट है, तो बहुत सारी रिसर्च हुई कि जिस कपल्स में कोई एक लॉस हो जाता है, दूसरे कपल की बहुत जल्दी, मतलब ऑन एन एवरेज डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं वो आइसोलेशन का फील करता है। सो दे स्टडीड आल्सो आइसोलेशन। आइसोलेशन isolation is they feel isolations। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया। आई विश समझ में आ रहा कि इनकी साइकोलॉजी क्या है। इनकी साइकोलॉजी थी कि ह्यूमन के जो गोल्स हैं, वो बड़े बड़े गोल्स ही इंसान के जीवन को सेट करते हैं। छोटे गोल्स तो बहुत छोटी चीजें हैं। So we cannot deny the importance of religion and philosophy in the development of self। एक और कर ले या फिर अगली क्लास में? अगली क्लास दैट इज अ टॉपिक ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। खूबसूरत टॉपिक, बहुत बेहतरीन है, मजा आ जाएगा। और इसकी खत्म हो जाएगी यूनिट 2 वीक में खत्म होता है। तो today is Tuesday, you have a 4 days more classes, this Saturday 4 classes। so आप कुछ पूछना चाहो इसमें एक बार देख लो। Thank you those who are online।